In the second part of the video, we will discuss about graphical representation of data. Means how can we represent the data graphically? Okay, so usually comparison among individual items are best shown by means of graph. So graphical representation of data is very easy and very easy to represent it. Okay, so we have three method. Okay, first one is bar graph, second is histogram, third is frequency polygons. First of all, we will discuss about bar graphs. So in the earlier classes you have already studied about bar graph. So as you know that bar graph is a pictorial representation of data in which usually bars of uniform width are drawn with equal spacing between them on the axis. Okay, and the value of the variables are shown on the y-axis and the heights of the bar depend on the values of the variables. So let us take the example. Example number 5. In particular section of class 9, 40 students were asked about the months of their birth and following graph was prepared for the data so obtained. ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया, 9th क्लास के हमारे अलग अलग सेक्शंस थे, उसमें से 40 स्टूडेंट्स को हमने बर्थ मंथ बताने के लिए बोला. ठीक है, तो वहाँ से हमारे पास जो डाटा कलेक्ट हुआ तो उसके अकॉर्डिंग हमने ये ग्राफ बनाया. ठीक है, नाउ ऑब्जर्व द ग्राफ गिवन अबव एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. वी हैव टू ऑब्जर्व दिस ग्राफ एंड वी हैव टू गिव द आंसर ऑफ द क्वेश्चंस. द फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी स्टूडेंट्स वर बोर्न इन द मंथ ऑफ नवंबर, कि नवंबर में कितने स्टूडेंट्स का बर्थ हुआ, तो वो हमने बताना है. सो नवंबर कॉलम इज हियर एंड वी चेक इट. हियर आर 4. So how many students that were born in the month of November? So 4 students are there. Okay. Next is in which month were the maximum number of students born? तो सबसे ज़्यादा किस मंथ में जो स्टूडेंट्स हैं वो बॉर्न हुए हैं, तो सबसे ज़्यादा देखो हमारे पास ये वाला है, तो ये कौन सा मंथ आ रहा है, अगस्त. ठीक है, और अगस्त में कितने हैं, 6 स्टूडेंट्स. Now the next example is a family with the monthly income of rupees 20,000 had planned the following expenditure per month under various heads. तो एक फैमिली है जिसकी मंथली इनकम 20,000 है, तो उसने जो एक्सपेंडिचर है वो बताएं कि मतलब प्लान किए हैं कि कितने कौन सी चीज़ पे वो कितने मनी स्पेंड करेगी. सो एज यू सी ग्रोसरी, now expenditure is given in 1000 rupees, so here is 4 means 4000, rent 5000, education of children 5000, medicine 2000, fuel 2000, entertainment 1000, miscellaneous 1000. मतलब miscellaneous में ये आ जाता है कोई अदर चीज़, कोई घर का कुछ ख़राब हो गया या कुछ भी ऐसे, तो miscellaneous में 1000 रुपीज़ वो स्पेंड करेंगे. ठीक है, draw a bar graph of for the above data. So now we have to draw the bar graph. So as you see, I have graph paper. First of all, we have to draw x-axis and y-axis. So as you see, I draw the x-axis and y-axis. So remember that this is our x-axis and this is our y-axis and this is origin. Here value of x and y is 0. Okay, so here we write the expenditure. As you see, 1 2 4 5 in this way expenditure is given. So according to this we have to take the expenditure. So like I take the difference of 1 2 3 4 5 6 and 7, up to 7 I take, and here I write the expenditure that I take in 1000 rupees, in 1000
rupees. Okay, now I draw the heads. First one is grocery, 4,000. So 4 is here, and I leave the one box and draw here grocery. And here I write grocery. You can also write here, या इसमें भी लिख सकते हो, जहाँ पे आप लिखना चाहते हो वहाँ पे लिख सकते हो grocery. Okay, the next one is rent. Rent is 5,000. So 5 is here. Now I draw here. And this way we draw rent. So here you can also write rent. Okay, तो rent हमारा कितना है 5,000. Clear? So in this way we can draw it. Okay, so this is our bar graph. And remember one thing कि अगर अब देखो यहाँ पे हमने एक बॉक्स लीव किया, ठीक है, यहाँ पे भी एक बॉक्स लीव किया, यहाँ पे भी एक बॉक्स लीव किया. अगर आप यहाँ पे एक एक बॉक्स लीव कर रहे हो तो सभी में हमने एक एक बॉक्स ही लीव करना है, ठीक है. अगर दो दो कर रहे हो तो सभी में दो दो. मीन्स ये जो हमारा डिस्टेंस है ये हमारा सभी में क्या होना चाहिए, सेम. क्लियर? Next we will discuss about histogram. So histogram is the same as that bar graph, but it is used for the continuous class intervals. Okay, when class interval is given then we use histogram. Okay, so let us take an example. Weight of 36 students are given. ओके, मीन्स 30.5 से लेके 35.5 तक हमारे पास कितने स्टूडेंट्स हैं जिनका वेट इनके बीच में आ रहा है, देयर आर 9 स्टूडेंट्स. ओके, सो हियर डाटा इज गिवन. नाउ वी ड्रॉ द हिस्टोग्राम. Similarly in that way, first of all we draw x-axis and y-axis. Okay, in this side we write the number of students. So as you see that 9, 6, 15, 3, 1, 2. So these type of number of students are given. So that's why I take the difference of 2, 2. So here I take 2, then 4, then 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Up to 18 I take, and here I write the number of students. Number of students. Okay, so our first class interval is 30.5 to 35.5. So as you see, this is start from 30.5. It is not start from 0. So on the x-axis we draw a kink, K-I-N-K, kink. We draw kink because it does not start from 0. So that's why we draw here a kink like this. Okay, ऐसे हमने एक kink draw कर लेना है. Clear? On the x-axis. Now 30.5 to 35.5 हमारे पास कितने students हैं? 9. Okay, so firstly here we write 30.5. Here we write 35.5, then 40.5, then 45.5, 50.5, up to 60.5 I write here. Okay, so first is 30.5 to 35.5, 9 students. So 30.5 to 35.5, here we have 9 here. Okay, so we draw
So this is 30.5 to 35.5. Now 35.5 to 40.5. How many students are there? 6. Okay. So 35.5 to 40.5 we have 6 students. So 6 is here and like this. ओके कि 30.5 से 35.5 के बीच में हमारे पास कितने आ रहे हैं? 9. और 35.5 से 40.5 के बीच में हमारे पास कितने आ रहे हैं? 6. नाउ 40.5 टू 45.5, 15 स्टूडेंट्स. सो 15 इज हियर एंड वी ड्रॉ इट. एंड इसको हम थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे. ओके, एंड दिस वे वी कैन ड्रॉ द हिस्टोग्राम. ठीक है, तो 40.5 से 45.5 हमारे पास 15 स्टूडेंट्स हैं. 45.5 से 50.5 के बीच में 3 स्टूडेंट्स, देन 1, देन 2. ओके, तो इस तरीके से हम हिस्टोग्राम ड्रॉ कर सकते हैं. एंड हियर वी राइट वेट्स. ओके, दैट इज गिवन इन kg. Clear? So remember that here we have to write number of students and here we have to write weight. तो अगर ये नहीं लिखोगे तो इनके मार्क्स कट हो जाएंगे. Now we will discuss about frequency polygon. Okay. So as you see, I already here draw the histogram. Now I take the midpoints of this. Here I take the midpoint B. Here C. Midpoint ले लेने हैं हमने. ठीक है. D, E, F and G. Here I take the midpoints. Now we join it by the line segment. हम इसको इस तरीके से लाइन सेगमेंट से ज्वाइन कर लेंगे. Okay. After joining these points, we obtain the figure B, C, D, E, F, G. Okay. To complete the polygon, we assume that there is a class interval frequency 0 before 30.5 to here. Okay. And 1 after this 55.5 to 60.5 इसके बाद में. ठीक है, तो यहाँ पे हम एक ले लेंगे पॉइंट H and here we take a point A and join these. Okay. So A, B, C, D, E, F, G, H is a frequency polygon. ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया? फ्रीक्वेंसी पॉलीगन. तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में हम क्या करते हैं? सबसे पहले फर्स्टली वी ड्रॉ द हिस्टोग्राम. आफ्टर वी टेक द मिड पॉइंट्स एंड जॉइन दीज मिड पॉइंट्स. क्लियर? Further we have some examples like here marks of students are given out of 100 and marks of 51 students are given and we have to draw the frequency distribution table. Okay, frequency polygon. So first of all we draw the histogram. Okay, after that we take the midpoints
इसके बाद हमने मिड पॉइंट्स ले लेने हैं इनके, एंड देन वी हैव टू जॉइन दीज मिड पॉइंट्स, देन वी गेट द frequency polygon. Clear? Now the second method to draw the frequency polygon is that we can also draw frequency polygon without drawing histograms. ठीक है, कि हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, एक तो हमने हिस्टोग्राम ड्रॉ करके फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ड्रॉ की, ठीक है। अब अगर हमने हिस्टोग्राम ना ड्रॉ करना हो, सीधा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ड्रॉ करना हो, तो हमारे पास इसके लिए भी एक मेथड है। For this, firstly we find the midpoints of class interval. Okay, so how can we and these midpoints of class intervals are called class marks. Okay, so how can we find the midpoint? So as you see, the example is given that in a city, the weekly observation made in a study on the cost of living index are given the following table, and we have to draw the frequency polygon. Okay, so first of all we find the midpoint. So how we find the midpoints or class mark? The formula is upper limit plus lower limit upon 2. So this is the formula to find midpoint or class mark. So here we apply the formula. 140 is the lower limit and 150 is the upper limit upon 2, which is equal to 290 upon 2, which is equal to 145. Okay, so classes. So this is given, and here we write the class marks. So first को जब हमने ऐड और डिवाइड किया 2 के साथ, तो हमारे पास कितना आया 145. Then again the next 160 plus 150 upon 2, 310 divided by 2, which is equal to 155. So we write here 155, again 165, 175, 185, 195. ओके, सो सिंपली आप ये भी कर सकते हो कि फर्स्ट हमने जैसे क्लास मार्क निकाल ली, तो उसमें ना 10-10 ऐड करते जाओ. अब 10-10 ऐड क्यों करना है? क्योंकि हमारे पास डिफरेंस कितना कितना है यहाँ पे 10-10 का. जितना डिफरेंस हो फर्स्ट क्लास मार्क निकालने के बाद, उतना डिफरेंस वो इसमें हम क्या करते जाएंगे, ऐड. क्लियर? नाउ वी ड्रॉ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन. So as you know, first of all I draw x-axis and y-axis. Here I write the origin. Okay, so now as you see that the table is here. Frequency is given that 5, 10, 20, 9, 6, 2. So according to this frequency I write the numbers. Like I take the difference of 2, so here I write 2, 4, 6, 8 up to 20 I write here, and here we write the number of weeks, because number of weeks are given na. Okay, so that's why we write here number of weeks. And now the class mark is given as you see 45, 155. So यहाँ पे जो classes हैं वो 140 से start हो रही हैं. So that's why we draw firstly king. So here we draw a king like this. Okay, so firstly I write here 135. क्योंकि हमारे पास 10-10 का डिफरेंस है, 145, 155, 165, तो हम इसमें क्या करेंगे 135 से स्टार्ट करके यहाँ पे लिख लेंगे 135, 145, 155, then 165. In this way firstly we write here. Now here we write the cost of living index. Cost of living index, it is given.
Okay, so now we mark. So first one is 145 पे कितने हैं 5 है, ठीक है. So 145 is here and 5 is here. Next is 155 10, 155 is here and 10 is here. पॉइंट लगाना है जस्ट हमने, ठीक है. नेक्स्ट 165 20, so 165 here, 20 is here. Next 175 9, 175 and 9 is here. 9 जो है 8 और 10 के बीच में आएगा तो हम यहाँ पे ले लेंगे. नेक्स्ट 185 is 6, 185 is here and 6 is here. Next 195 2, 195 2 is here. Okay, and one point we take to complete it. Here we take the H and here we take A point. So this is our point A, B, C, D, E, F, G, H. Now we join these points A to B, B to C, C to D, then DE, EF, FG and GH. Okay, so this is our frequency polygon. Clear? So also remember that frequency polygons are used when the data is continuous and very large. So it is very useful for comparing two different sets of data of the same nature. Okay, like for example comparing the performance of two different sections of the same class. Okay, so these are very important and I hope you understood the graphical representation of data.